Hello my beautiful soul. Hello my dear ones. फ्रेंड दिस इज़ अर्चना. अर्चना एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है. अर्चना एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स, होम साइंस एंड जनरल स्टडीज रिलेटेड ऑल द कंटेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. डियर ऑल, इट वाज अभी हमने नेशनल इनकम पढ़ी, उसके एग्रीगेट्स पढ़े. Now we will discuss about the method of calculating national income. Value added method. Basic concept. Production goods produced by all. Production unit of producers is called production. Production क्या होता है? Goods produced by all production units of producer is called production. 3 sectors: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर. इसके बारे में पहले ही हमने डिस्कस कर लिया है. इंटरमीडिएट गुड्स, दोज गुड्स which are within boundary line of production. Value is yet to be added to those goods and these goods are yet not ready for use by their final users. Final goods, those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users. Net factor income from abroad, NFIA, is difference between factor income earned by our residents from abroad and factor income earned by non-residents in our country. Formula: फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ठीक, फ्रॉम से टू को माइनस कर दोगे तो आपको आ जाएगा NFIA. क्लियर? डेप्रिशिएशन, ग्रॉस एंड नेट वैल्यू. कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन. नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर कॉस्ट, market price value difference between indirect tax and subsidy is called net indirect taxes. Intermediate consumption, it refers to those expenditure by the producers on purchase of intermediate goods during an accounting year. Accounting year, time period between 1st to 31st March is called an accounting year. Value added method is the method which measures national income by estimating contribution of each producing enterprise to production in the domestic territory of the country in 1 year including value of NFIA. Correct? मतलब वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? इज द मेथड विच मेजर नेशनल इनकम बाय एस्टिमेटिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस to produce in a domestic territory of a country in a year including value of NFIA. फिर फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन. दीज आर क्वेश्चंस. तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन है, आप रीड कर लो. ठीक है, फिर भी रीड ही कर देती हूँ मैं. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू एडेड मेथड? व्हाट डू यू मीन बाय, वही सेम, वैल्यू एडेड आउटपुट. एंड व्हाट मीन्ड बाय इंटरमीडिएट कंजम्पशन. एक्सप्लेन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग. कंप्लीट द फॉर्मूला. वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स. Gross value, added value of output, changing in stock, closing stock. What is the difference between gross value market price and net value added market price? What is difference between value of output and gross value output? Higher order thinking questions. Find out national income from following data. आइटम्स आपके आ गए. NRS इन करोड्स. वैल्यू ऑफ आउटपुट
इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आउटपुट कितने आ गए आपके 1000, ठीक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200 NFIA -10, डेप्रिसिएशन 20, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 30। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड of firm A and B. A sells to B. 20. Purchase of households from A. 10. Experts of A. 5. Sales of B. Government is आपका 50. Change in stock B. 10. Change in stock है 5. Calculate net value added factor cost from following data. Item purchase of machinery to be used in production unit. Rupees in crore 100, sales 200, intermediate cost 90, indirect tax 12. ठीक, just wait. नेक्स्ट हमारा है टू 200 तक हो चुका था। इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, इनडायरेक्ट टैक्स 12, चेंज इन स्टॉक 10, एक्साइज ड्यूटी। तो दीज आर क्वेश्चंस, ठीक है ना, कैलकुलेट करने को दे रखा है। अब इसका पिक्चर भी क्लिक कर लो, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मतलब आपके यहाँ बन सकते हैं, बस यही है। आंसर्स भी दिए हुए हैं। ओपनिंग स्टॉक 50, intermediate purchase 500, purchase of machinery on 200, import raw material. Give following data. Find net value added factor cost by farmer producing wheat. Item sale of wheat by farmer in the local market 6,80,000 crore. Purchase of tractor 5 lakh. Procurement of wheat by the government from the farmer 20,000. Consumption of wheat by the farming family during the year 5,000. Subsidy 2,000. Expenditure on maintenance of existing capital stock 10,000. Calculate sales from following data. Then items, net value added at factor cost 560 in crore, depreciation 60, charge in stock 30 -30, entry intermediate cost 1000, export 200, indirect tax 60. Find gross value added factor cost. Import duty 100, excise 100, price output sold import duty 1000, excise 1000, output sold units 5000, price per unit of output 6, changing stock 600, intermediate cost 16,000, subsidy 500. Explain the economic value of using output method. Estimation of GDP. Which item should not be included in the value added method of measuring national income? NNPCF. Value of output intermediate. ये आंसर्स हैं ऊपर के,
तो आराम से करना, ठीक है ना, स्टॉप स्टॉप करके ना होगा पिक्चर्स क्लिक कर लेना, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। फर्स्ट का है NNPFC, वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन डेप्रिशिएशन NIT NF प्लस NFIA, ठीक। 1200, 1000 minus 200 minus 20 minus 30 plus minus 10, 740 करोड़। सेकेंड का फर्म ए सेल प्लस चेंज इन स्टॉक 20 प्लस 10 प्लस 5 यानी प्लस 5 इक्वल टू 40 करोड़। फर्म बी सेल्स चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50 प्लस 20 equal to 60 crore. Sells change in stock intermediate consumption 200 plus 10 minus 90 minus 12, 108 crore. GVAFC sells of change in stock intermediate consumption NIT equal to 8000 plus 100 minus 5, 5500 plus 200 equal to 2800 crore. NVAFC sells plus change in stock intermediate consumption minus NIT depreciation 800 plus 20 minus 50 minus 500 plus 40 minus 30 equal to 280. NVAFC sells plus change in stock intermediate consumption NIT depreciation 6,80,000 plus 20,000 plus 5,000 plus 7,05,000 plus 2,000 minus 10,000 equal to 69,7,000. Sells NVAFC depreciation plus NIT plus intermediate consumption change in stock 560 plus 60 plus 60 plus 1000 minus 30 equal to 1710, right? Okay. उसके GVAFC sales plus change in stock intermediate consumption minus NIT sales equal to 5,000 into 6 equal to 30,000. 30,000 plus 600 16,000 minus 2,000 minus 500 13,100. इनकम मेथड आपका आ गया। इनकम मेथड बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए। ये बेटा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। Compensation of employee, all those payment both in cash and in kind which are made by employees to employee for rendering productive service. The consumptions of employee क्या होता है? All those payment both in cash and in kind which are made by employers to the employee for rendering productive services. Compensation of employees, ठीक है। Pension on retirement defer phases which is related to factor service rendered earlier by the employees. Rent amount received by a landlord from
the tenant for use of his land and building. ठीक. Royalty, income received for granting leasing rights of subside asset. Interests, income received by lender of funds of a production unit. Profit, income factor of production are called entrepreneurship for organizing production and undertaking risk. Operating surplus, sum total of rent, royalty, interest and profit. Mixed income of self-employed, any income that includes more than one type of factors income. Explain the steps involved in calculation of national income through income method. What are the precautions to be taken while calculating national income through income method? Explain the main component of compensation of employees. State whether the following income are factor income or transfer income. Give reason. So pocket money, bonus, income, indirect tax, interest received by household and his deposit in bank. Why operating surplus not arise? General government, free meals given to employees if it is not necessary for work is a facility given to employees and it is related as consumption of employees. Hence, it is included in income method. Estimate national income. However, meals given to bigger are not included in the national income. Give reason why it is not included in national income and identify the value emphasis by providing free meals to bigger. Compensation of flood victims is a good social security measure by government, but why it is not included in estimate national income. 8th, GDP calculation does not directly include social cost, environment damage, for example, global warming, acid rain. Do you think these costs should be included in GDP? Why and why not? While estimating national income, how will you treat the following? 9th आपका while estimating national income, how will you treat following? Give reason. Input rent of self-occupied, interest received on debentures, financial help received by
फ्लड विक्टिम, कैपिटल गेन, ओल्ड एज पेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट। ठीक है ना, ये हो गया। एंड इसी पे से हम नेक्स्ट पे आएंगे। ये मैंने पढ़ लिया शायद, नहीं हुआ। अच्छा हाँ, 9 तक हो चुका था, राइट। हाँ, 9 तक हो चुका था। 10th का देख लो, फटाफट ये देख लो। उसके बाद हम जो है थोड़ा स्टॉप करेंगे वीडियो, नेक्स्ट उस पे आएंगे वीडियो पे, राइट। आइटम देखो, 10th का देख लो। एनडीपी, एफसी, compensation employees operating surplus from the following data: rent 1400, interest royalty 200, interest 1500, wages and salaries 800, profit 500, mixed income 1000, depreciation 70, employees contribution to social security scheme 20, NDPFC consumption of employees, mixed income of self-employees operating surplus, consumption of employees 8 plus 200 equal to 1000, operating surplus 1400 plus 200 plus 1500 plus 500 equal to 3600 equal to 800 plus 200 plus 1000 plus 1400 plus 200 1500 500 equal to 1000 1000 3600 यानी 5600। करेक्ट। ये जब तक आपको फॉर्मूला एकदम रटा नहीं रहेगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, इसमें देखो, रेंट 13,300, वेजेस 200, indirect tax 3800, gross domestic fixed capital formation 6200, operating surplus 5000, mixed income of self-employed 16100, NFIA 300, next export -100, right? MBPFC compensation of employees plus mixed income of self-employed operating surplus 13,300, 16,100, 5,000 equal to 34,400। NNPFC क्या होता है हमारा? NNPFC इक्वल टू NDPFC माइनस NFIA। 34,400 प्लस 300, 3,4700 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में देखिए। क्वेश्चंस आपके आ गए। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। ठीक, डोमेस्टिक इनकम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है, ये बोल रहा है। ठीक, नहीं पूछ रहे, नॉट, याद रखना। फर्स्ट अभी हम चॉइस पे आएंगे, उस पे आएंगे, मल्टीपल इसके आंसर भी होंगे ना, तब आएंगे उस पर। सो which second, which is not include consumption of employee consumptions of employee कौन सा नहीं है? which is included consumptions of employees, मतलब एक consumptions of employees में कौन सा include नहीं होता, एक होता है कौन सा include है। करेक्ट। इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो डियर ऑल, यही वीडियो मैं स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट
तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। लव यू ऑल गाइस।